मेट टुगेदर वार हुआ था। अच्छा वॉर हुआ था अच्छा 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 उस टाइम में ये मोनास्ट्री डिस्ट्रॉय हुआ था। ओके तो उसके बाद द हिंदूज केम एंड दे आल्सो आस्क्ड यू टू वर्शिप टुगेदर ओके नाइस नाइस So that's really important. ट्रू ट्रू Ritual, tradition, religion is important, but most important thing is we have to practice internal mind. ये सब गोरखा लोग ये बुद्धिस्ट लोग भुटियाल और नेपाली लोग सब मिल के रहते हैं and since then the Buddhists and Hindus do their puja archana in the very same place. Amazingly, they started at the very same time, they end at very same time. There is this synchronization to this place, and जीता जागता उदाहरण है ये हमारे देश के डाइवर्स कल्चर का. Hello guys, welcome to another brand new episode of the Kurseong Exploration series. Now in this episode we're heading for Darjeeling, and in Darjeeling आपको घुमाएंगे the Mahakal Temple, and this is not any other temple, it has something very special. Keep watching, I hope you'll like it. But before that, let me show you around a bit of Darjeeling town and the iconic Darjeeling railway station. So this is our next destination called the Mahakal Temple. आपको यहाँ से सीढ़ी लेनी पड़ेगी just to reach there. And just to show you around the kind of vehicles we have, it's almost full. That's where it shows that Darjeeling is just becoming like Shimla. भरा हुआ रहता है, भीड़ रहती है, चलने को जगह नहीं, पार्किंग को जगह नहीं. And that's why हम दार्जिलिंग आना नहीं चाहते थे. But obviously चलो अब हो गया मौका पड़ा. As you can see, it is almost becoming Shimla. बैठने को जगह नहीं, चलने को जगह नहीं. Thank God ये जो एरिया है थोड़ा आइसोलेटेड है. And since it's a big city, the kind of hotels here are 5-star. उनमें से एक होटल आपको दिखाना चाहूँगा. आप देख सकते हैं. It has a great tennis court, and I'm very sure that this hotel must be one of the 5-star hotels in the city of Darjeeling. आसमान भी थोड़ा अब क्लियर हो रहा है. Clean blue skies. Although this is the temple, but you can see these Tibetan flags, which shows how different religions in the hills, such as Buddhist and Hindus,
peacefully coexist. A lot of Nepalis stay here and they're predominantly Hindu. And that is why this huge temple of Lord Shiva, where we are making our way. So we had this history about this place which says that the Gorkhas invaded this place and then broke the monastery which was here right there, right in this place, shuru se. But then they broke it and then they turn it into a temple. This temple which you can see, the Mahakal Temple, 3 लिंग यहाँ पे हैं, 3 शिवलिंग यहाँ पे हैं. But it was nice of them that they came and they asked the Buddhists who were staying in the nearby Bhutia Basti to come and join them in their religious practices. And since then, the Buddhists and Hindus, do their puja archana in the very same place. Amazingly, they started at the very same time, they end at very same time. There is this synchronization to this place. And जीता जागता उदाहरण है ये हमारे देश के diverse culture का. And not only that our country is diverse, the thing is that unity in diversity. The whole monks and priests sitting together, doing their religious practices together, starting at the same time, ending at the same time. I haven't seen this before. I think if you have come to Darjeeling, you must visit Mahakal Temple. 1874 बुद्धिस्ट और हिंदू का मिलाप है ना ये मंदिर पहले आपका नाम बोल दीजिए. माय नेम इज विश्वास महाराज और मैं दार्जिलिंग महाकाल मंदिर से बोल रहा हूँ. और ये महाकाल मंदिर पहाड़ों की रानी हिमालय के गोद में बसा हुआ दार्जिलिंग में महाकाल मंदिर जो है, यहाँ पर सब धर्म के लोग या हिंदू हो या बुद्धिस्ट तो पूजा करते हैं. यहाँ पर बुद्धिस्ट और हिंदू को दो मिलकर दो तरफ में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं. और हर धर्म के लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं. इसी के लिए मतलब महाकाल मंदिर एक तो एकता का प्रतीक है. यहाँ पर हर धर्म के लोग पूजा करने के लिए आते हैं. और हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और ये बुद्धिस्ट एक साथ मिल करके दार्जिलिंग में ये महाकाल मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं. और ये बाबा का बहुत ये है मान्यता है. यहाँ पर लीडर लोग भी इलेक्शन के टाइम में यहाँ पर अपना मनता मांगने के लिए आते हैं और विजयी होते हैं. तो ये महाकाल मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है. वर्ल्ड का आदमी यहाँ पर मनता करते हैं, पूजा करते हैं, आते हैं सब लोग. और ये मंदिर जो है ब्रिटिश टाइम में यहाँ पर एक दोरजे लामा नाम का पुजारी थे जो महाकाल मंदिर में पूजा सर्वप्रथम कर रहे थे. तो ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश लोग घूमने के लिए यहाँ पर आया तो पूछा था तुम्हारा नाम क्या भाई? तो बोला मेरा नाम दोरजे. और किसका पूजा करे? ये लिंग है, शिला है. तो उस वक्त से इनका नाम या दोरजे लिंग.
अभी नाम है दार्जिलिंग। दोरजी लामा का समाधि भी उधर है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, इधर भी व्हाइट है। हाँ 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 व्हाइट दिख रही है। हाँ, दोरजी लामा की समाधि है और तभी से यहाँ पर बुद्धिस्ट का संख्या ज़्यादा है, इसलिए बुद्धिस्ट लामा भी रहते हैं और हिंदू बुद्धिस्ट दोनों मिलकर के साथ में पूजा करते हैं। महाकाल मंदिर जो है एकता का प्रतीक है। अच्छा यहाँ हर धर्म का पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। Now we are getting inside the main temple, the Mahakal Temple. This is the main temple, and as you can see, it's being worshipped by a Hindu priest, and then you also have the Buddhist monks, sitting here and doing their ritual, which is quite unique. I don't think you can see it anywhere in India where you have a Hindu god being worshipped by Buddhist monks. That is the huge strength of this country. Diversity, unity in diversity. यहाँ पे जो पूजा हो रहा है हिंदू एंड दोनों के तो ये दोनों पूजा कब से स्टार्ट हुआ? शुरू से आप लोगों का सोचा? बुद्धिस्ट हिंदू दोनों का एक जगह दोनों धर्म एक साथ। It's really important. You have to stay together. Yes. I think the rest of the universe, people here making divide. Yeah. भेदभाव कर लेता है। यहाँ पे ऐसे नहीं, दोनों साथ में बैठ के पूजा किया। ये एक अच्छा मैसेज है सबके लिए। So here is the Hindu god. Where is your god? Your god is here, Buddha. So you both start puja at the same time and end also at the same time. So since when this thing is happening, the simultaneous religious worshipping of both Hindus and Buddhists, it's happening right from the start. It's starting from the Buddhist monastery. Okay, this was a Buddhist monastery first. Actually first. Okay, So our monastery just down there. That monastery name is Bhotia Basti Monastery. Dhoti Avasti, right? That monastery was belong here before, established here. Okay, Before British. right. And then after destroyed, the monastery. Destroyed by whom? Some problem with that time Sikkim kingdom, Okay. Sikkim was 1975 merged to India. Okay, Although before 1975, Sikkim is a small kingdom. okay, Now, small state of India में merge किया. right. उससे आगे किंगडम था. Sikkim kingdom and Nepal kingdom दोनों एक Met together. war हुआ था. अच्छा war हुआ था. अच्छा. उस टाइम में ये monastery destroyed हुआ था. Okay. तो उसके बाद the Hindus came and they also asked you to worship together. Okay, nice. So that's really important. True. Ritual, tradition, religion is important, but most important thing is we have to practice internal mind. Sixth sense बोलते हैं ना? Sixth sense. True, I get it. Yeah. View, hearing, smelling, taste, touching, and then sixth sense is mind. ये आत्मा को शुद्ध रखना है. किसी का भेदभाव नहीं करना है. बड़ा हो छोटा हो, छोटा कास्ट बड़ा कास्ट ये चल रहा नहीं. ये नहीं चल रहा है. क्योंकि सब मनुष्य, all are human beings. Nobody needs suffering. Everybody needs happiness, love, kindness.
Amazing, wasn't it? Now, after talking to this monk, we made our way to another corner of this temple, जहाँ पे हमने देखा एक Buddhist monk को who was chanting mantras for a Hindu god. Now, if you don't believe me, then catch a glimpse of these visuals. So, as promised, I showed you why Mahakal Temple is not any other temple. This is a symbol of our country's unity in diversity. But before we end this episode, I'll just show you the raw footage of the sacred ceremony that this priest did on me. It's a raw footage without any music, with all the mantra and chanting. Hope you like it, and that will be it in this episode. We'll be back for the final episode where we covered the Japanese garden. ओम भगवान कल्याण बाद भगवान Thanks for watching. सदा सुसरो जय सम भगवान कल्याण रक्षा कमन कान रक्षा परि भगवान कल्याण ब्रह्मा मृत ब्रह्म शुक्ल निरावण सुसरो जय भगवान कल्याण बाद धीर बलि गाजा दान इंद्रो महाव्रत नामी रक्षा मांचल भगवान कल्याण बाद भगवान रक्षा दो इच्छा पूर्ण जय प्रदर्शन शांति जय कल्याण सदा सुसरो जय शांति भगवान कल्याण बाद